हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का टॉपिक सेट्स रिव्यू करेंगे और उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को और आगे आने वाले चैप्टर्स को भी हम ऐसे ही 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले सेक्शन में हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स and the concepts which are related to competitive exams, उन सभी concepts को study करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ examples, objective examples करेंगे और फिर हम unsolved examples करेंगे जो हमारे different competitive exams में आए हुए हैं, like JEE Mains, your NDA exam, KVPY and all the competitive exams which are related to class 11th and 12th. So stay tuned with us. हम सारा क्लास 11th और 12th का टॉपिक अपनी सीरीज में करने वाले हैं, but it is directly related to the competitive examinations only. Fine. So let's begin with the topic sets. सभी अपना पेन कॉपी अपने साथ रखेंगे because we are going to discuss the each and every details of the topic. So the theory of sets was introduced, or we can say first studied as a mathematical idea by Cantor. Studied as a mathematical idea by a famous mathematician Cantor between 1845 to 1918. This was the time of Cantor. So let's begin with a well-known definition of the set, that a set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. Fine. A set is a collection of well-defined objects which are different from each other. हमारा सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट्स कैसे, जो एक दूसरे से डिफरेंट हो. फाइन. So here by well defined we mean that given an object we can find whether it is an element of a set or not an element of a set. Is it fine? So this term is very important here, well defined. Fine. So next what we people have to remember here, that we denote a set by capital letters and the elements of the set by small letters. So you can note it down that set is denoted by capital letter like we can say set A, set B, set C, and elements of the set by small letters. A, B, C, and so on. And we generally denote the elements by the small letters. Right? Now let's take an example. The collection of good students in a class.
collection of good students in a class. So this collection is not going to be well defined because here the term good students, fine, this good students is vague and it is not well defined. Fine. So we will say that this collection of good students in a class is not a set. Reason you can say that good students, it is a vague idea. For some, the good students means those who are good in sports. For some, good students means those who are good in academics. For some, the good students means those who are good in sports as well as academics and so on. Fine. So this definition of good students, it will vary from person to person. So we cannot say that this collection is well defined. Hence, it is not a set. But whereas if we say that collection of college students, fine. So this collection of college students, it is a set. It is a well-defined collection of college students. It is a well-defined collection and it is a set. Fine. Because the college students means those who are studying in college. So it is a set. Fine. Now, next we talk about there we have different methods to write the set. Fine. So let me change to another color. Methods to write a set. Methods to write a set. एक सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं. एक मेथड है जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और रोस्टर मेथड कह लीजिए, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं आप इसे, और वी कॉल इट एज लिस्टिंग मेथड ऑल्सो. इस लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वी लिस्ट और वी राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट in a row separating by the every two elements by a comma and enclose them inside the curly bracket. Fine. So this is something you need to understand that what we do in this method, हम set के सभी elements को curly braces के अंदर कॉमास के साथ सेपरेट करते हुए लिख देते हैं. दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज योर रोस्टर फॉर्म और वी कॉल इट एज अ लिस्टिंग फॉर्म आल्सो. फाइन. जहां सेट के सभी एलिमेंट्स करली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट करके रखे हुए हैं. सो दिस फॉर्म इज नोन एज योर सेट roster form of the set or we call it as a listing method also. Second हमारे पास जो method होता है, this is the first one, और set को लिखने के लिए, represent करने के लिए हमारे पास जो second method है, that is known as your set builder method. तो set builder method as the name suggests वो method जिसमें हम set को build करते हैं. फाइन. और इट इज ऑल्सो नोन एज योर रूल मेथड. यहाँ रूल मेथड से मतलब है कि हम एक रूल को मेंशन करेंगे फॉर अ सेट. फाइन. In this case, what we particularly do, we write down a property or a rule which gives us all the elements of a set. Fine. Or simply we can say that we give the definition of a set over here in this rule. Fine. So we may write that what we do in set builder form, we write down a property or a rule
which gives us all the elements of a set. तो देखिए क्या था हमारे पास, रोस्टर फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम आपको एक प्रॉपर्टी देंगे और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे सेट्स के। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए इज अ सेट, व्हाट इज ए? द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स such that x is a vowel. Fine. So this is the rule. This is the definition of the set, that x is a vowel. Fine. So by this, we can list all the elements of the set. That x is a vowel, that means x is A, E, I, O, U. This is a collection of vowels. So इस definition से हमें सारे के सारे elements मिल जाएंगे. Let me give you one more example. That B is a set. What is B? The set of all x such that x is a natural number less than 5. x हमारा कोई नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है, तो व्हाट डज इट मीन? ये जो सेट B होगा, ये हमारा लिस्टेड मेथड से हमें मिलेगा 1 2 3 4। फाइन, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेशन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी, एक रूल इन्होंने दे दिया कि सेट B क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 5 है आपका। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ सेट in two different methods. ओके, नेक्स्ट, इस तरीके के आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे। हम अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस रिव्यू कर रहे हैं। Now let me move on to the third part, that is we have the different kinds of sets. In this different kinds of sets, I'll talk about finite and infinite set. As the name suggests, फाइनाइट सेट हमारा कौन सा सेट होगा? जिसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट होंगे। A set which has only finite number of elements is called finite set, and set which has infinite number of elements is known as your infinite set. Fine. So for example, if I'll give the example of this set of vowels A, E, I, O, U. So it is an example of finite set. ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इफ आई राइट दैट B is the set of natural numbers 1 2 3 4 and so on, so it is an example of infinite set. फाइन, तो अगर किसी सेट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। If the set contains infinite number of elements, then it is known as your infinite set. Now next, I'll be talking about order of a set. Order of a set, or I should say, if I am talking about order, then it is supposed to be a finite set. Fine. So what is this order of a set? The number of elements in a finite set is known as order of the set. The number of elements in a finite set is called the order of a set. Fine. So let's say if A is a set, A is a set, or I should say A is a finite set, then order of a set is denoted by
O of A, or in some books you'll find it as N of A. Fine. And it is also called cardinal number of the set. इसे हम cardinal number भी बोलते हैं set का. Fine. So that is how we define order of a finite set. जितने number of elements उस set में होंगे, that will gives you the order of the set. उसे हम order of the set या cardinal number of the set बोलते हैं. So let's move on to point number 5. As we were discussing the types of sets, so in that continuity we will discuss null set, or we call it as empty set, or somewhere you'll find it as void set also. So as the name suggests, a set having no elements in it is called an empty set. एक सेट अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट. एंड इट इज डिनोटेड बाय, सी हाउ वी डिनोट a null set. It is denoted by the symbol phi, और करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा करली ब्रेसेस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज हाउ डू वी डिनोट a null set. Fine. So let's take an example. If I'll say A is a set of all x such that x square is -25 and x belongs to natural numbers. तो अब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है आपका वो -25 नहीं होगा. That means this A is what it is, 5. It is a null set. Fine. So that's how we define a null set. यही मैं आपको एक नोट और डलवा देता हूँ. A set consisting of at least one element is called a non-empty set or a non-void set. So a set consisting of at least one element is called a non-empty set or a non-void set. ठीक है. देखिए हमने डेफिनेशन void सेट की भी देखी, नॉन void सेट की भी देखी. वो शुड बी देयर इन योर माइंड दैट कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट हम किसे कहते हैं, बिकॉज दिस टर्म विल बी यूज्ड मेनी टाइम्स. सो यू शुड नो कि कम से कम एक एलिमेंट अगर उस सेट के अंदर है, देन वी कॉल दैट सेट एज नॉन एम्प्टी सेट और नॉन void सेट. इसके बाद हमारे पास यही एक डेफिनेशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. एज द नेम सजेस्ट, if a set consists of only one element, fine, a set consisting of single element
is called a singleton set. तो इस तरीके से हम सिंगलटन सेट को डिफाइन करते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं रिव्यू करूं जो हमने अभी यहाँ लिखा फॉर void set, तो इसी एग्जाम्पल को हम रिव्यू करके वी कैन राइट द we can write what is a singleton set। देखिए वही सेम एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूं। A is the set of all x such that x square is equals to 25 and x belongs to natural number। अभी इस केस में मेरे पास जो x होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5, फाइन, बिकॉज 5 स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो 25 होता है। सो नाउ दिस टाइम इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर singleton set, fine। Now let's move on to another very important set which is known as your universal set, fine। as the name suggests, ये फिर से हमारे पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और टर्म बहुत यूज होंगी, तो यू आर सपोज टू बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास जो है इट इज यूनिवर्सल सेट, फाइन, यूनिवर्सल सेट। एक बार डिमार्केशन डाल देता हूं आप लोगों को। चलिए, universal set, a set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set, fine। देखिए बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है, a set consisting of all possible elements, consisting of all possible elements which occur in the discussion, which occur in the discussion is called a universal set। It is denoted by U। देखिए इसके एग्जाम्पल्स हम आगे और भी लेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स का जो सेट होगा वो इसके लिए यूनिवर्सल हो सकता है, इंटीजर्स जो है वो इसके लिए यूनिवर्सल होंगे, क्योंकि बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग इंटीजर्स इट विल कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स, so it will contain all the elements which are in discussion। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स उसके अंदर कंटेन होंगे, so we can consider it as a universal set for natural numbers, fine। now यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट्स कंटेन्ड होते हैं, ये एक स्पेशलिटी होती है यूनिवर्सल सेट की कि हमारी जो पॉइंट ऑफ स्टडी है उस टाइम पर उसमें सारे के सारे जो सेट्स हैं
वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन होंगे। फाइन, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट आप नोटेशंस भी कह सकते हैं सेट्स के साथ साथ, जो हम जनरली पूरे अपने कैलकुलस पार्ट में यूज करेंगे। फाइन, सो सम इम्पॉर्टेंट नंबर सेट्स, what I right now said regarding natural numbers and integers and real numbers, तो यही एक हम नोटेशन देखेंगे that n, we denote n for set of natural numbers। n हमने जो सिंबल यूज किया वो नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए यूज करते हैं। फाइन, सो दिस n may be written like this, 1 2 3 and so on. It is a infinite set। Fine, then we have z, or in some books you will find it by I। Fine, what is this z or I? It is set of integers। integers के set को हम either we denoted by z, or in some books you'll find it by I also। So we have so on -3, -2, -1, 0, 1, 2, and so on। So it is an example। See, this is how we denote integers, set of integers। अब इंटीजर्स में हमारे पास ये नोटेशंस भी आपको मिलेंगी, z पॉजिटिव or you may find z negative। तो z positive means your set of all positive integers, set of all positive integers। तो ये set of all positive integers आपके पास क्या हो जाएगा? You'll be having 1 2 3 and so on। So it is nothing but your natural numbers only। And when we denote z negative, it means set of all negative integers। Fine, so here we'll be writing -1, -2, and so on। Fine, that is how we denote negative integers। इसके बाद हमारे पास एक नोटेशन है w, and we denote w for set of whole numbers। And you know it well, whole numbers, we have 0 1 2 3 and so on। Again it is an example of infinite set। Fine, अब यहाँ हमारे पास एक नोटेशन आता है z naught। What is this called? The set of all non-zero integers। What is this? Set of all non-zero integers। Fine, तो नॉन जीरो इंटीजर्स से मतलब क्या है इनका, कि +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। जीरो को छोड़ दीजिए बस, बाकी सारे जो इंटीजर्स हैं दे विल बी कंटेन्ड हियर। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। आफ्टर दिस वी हैव q फॉर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के सेट्स को हम q से डिनोट करेंगे। फाइन, then r is the notation for set of all real numbers। फाइन, रियल नंबर्स के सेट को हम r से डिनोट करते हैं। And you know well, r minus q, it is nothing but set of all irrational numbers। फाइन, कुछ बुक्स में इसके लिए नोटेशन आपको t मिलेगा, irrational numbers। In few of the books you'll find t as the notation for this irrational numbers। फाइन, इसके बाद ये हमने कुछ डिस्कस किए
different standard symbols for some sets like natural numbers को हम किससे denote करते हैं, whole numbers को हम किससे denote करते हैं. भाई तो कुछ standard notations थे हमारे पास ये, and you should remember them by heart. आपको पता होने चाहिए सभी notations because they are going to be very much useful for you in the coming time. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है पॉइंट नंबर 8 में, इट इज सबसेट. फाइन, तो सबसेट हमारे पास क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू बाय डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन वी विल सी. लेट ए एंड बी, ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं. फाइन, वी हैव टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स in the same universal set U. Fine. Then what we say, if X belongs to A implies X belongs to B. अगर X belongs to A imply करेगा X belongs to B, then A is a subset of, then A is a subset of B. फाइन. अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो X belongs to A का मतलब उन्होंने एक जनरल एलिमेंट A के अंदर लिया, and the same element is being found in B also, then we say A is a subset of B. Fine, A is a subset of B, and we simply denote it as A subset of B. Fine. Let's take an example. Let's take an example that A we have 1, 2, 3, 4, and B we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. So all the elements of A, they are in B. So what we will say, A is a subset of B. A हमारा जो है वो B का क्या होगा? सबसेट होगा. अब यहाँ सिंपल इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आप नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखिए. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट is a subset of itself. कोई भी सेट जो है वो हमेशा खुद का सबसेट होगा. That is what we can say, A is a subset of A. भाई A के सारे एलिमेंट्स A के अंदर हैं. Fine, for all A. हर एक A के लिए पॉसिबल होगा. Fine. So this is the point number 1 in notes. Then we have point number 2, empty set हम जो कहते हैं, empty set denoted by 5 is a subset of every set. Is a subset of every set. empty set जो है वो हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होता है. फाइन. पॉइंट नंबर 3 मैं यहाँ डिनोट करता हूं आपके लिए. ए आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इट इज सबसेट ऑफ इट्स यूनिवर्सल सेट हमेशा. फाइन, फॉर ऑल ए. ये हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में भी बोला था. फाइन, वेयर दिस यू इज यूनिवर्सल सेट फॉर इट. यू इज यूनिवर्सल सेट. भाई आपको पहले ही कहा था कि यूनिवर्सल सेट
उन सभी सेट्स को कंटेन करेगा जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। फाइन, सो हियर वी विल सिंपली सेइंग, हम सिंपली एक ही बात बोलेंगे कि दैट A is a subset of universal set. Next is a very important point. What we say, if A is a subset of B, A आपका B का क्या है, सबसेट है। Fine, then what we say, B is a superset of A. अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या होगा? This notation is known called as B is a superset of A. A B का सबसेट है तो B A का क्या होगा? सुपरसेट होगा। फाइन, ये कुछ हमने सबसेट पे पॉइंट्स नोट किए। सबसे पहला हमारे पास था कि हर एक सेट जो है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा हमने बोला कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तीसरा हमने यहाँ बोला कि ए जो है कोई भी सेट होगा तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट सेज कि अगर ए बी का सबसेट है तो हमारा बी जो है वो ए का सबसेट होगा। फाइन, next we have point number 9. Here we denote equal sets. So how do we define equal sets? Two sets A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. Fine. So how do we define equal sets? Two sets A and B. Fine. And they are supposed to be non-empty sets, are said to be equal. दो सेट्स हैं हमारे पास, इन्हें हम इक्वल कब करेंगे? इफ every element of A, every element of A is an element of B. And every element of B is an element of fine. So this may be written like this: A is a subset of B. A is a subset of B means every element of A is in B, and B is a subset of A means every element of B is in A. This implies A is equals to B. और देखिए ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल करके जब भी या जहां भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये चीज याद रखनी होगी कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, सेट बी जो है वो ए का सबसेट है। तो दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? देन वी कैन से बोथ द सेट्स आर इक्वल। Fine. Or if we want to prove that two sets are equal, then A is supposed to be a subset of B and B is supposed to be a subset of A. Fine. Now let's move to point number 10. Proper subset. Proper subset क्या होगा हमारे पास? If A is a subset of B, अगर A सबसेट है B का, A subset of B and A is not equals to B. A B का सबसेट है लेकिन A B के इक्वल नहीं है, then A is called proper subset of A जो होगा
वो बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फाइन, और उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, वी डिनोट इट एज ए सबसेट ऑफ बी। तो वहां पे जो इक्वल्स टू का साइन नीचे लगा होता था, वो साइन हम वहां से हटा देंगे एंड इट विल बिकम ए सबसेट ऑफ बी। Fine. So that's how we define equal sets. हम equal, proper subset हम ऐसे define करते हैं. Now let's move on to the next topic. देखिए ये मैं बिल्कुल basic points जो हमारे पास हैं, we are discussing those basic points and then we will move on to the next topics जो भी हमारे पास छोटे छोटे topics हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सेट्स के अंदर जो हमें याद रखने होते हैं। और हमारा सेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ द क्लासेस, 11th and 12th for both the classes. Sets is a very important topic because सारा का सारा जो mathematics होता है, it revolves around your sets only. After sets we will study relations and functions. Relations is a set, function is also a set, और सारा का सारा जो हमारा कैलकुलस होता है, that calculus moves around the functions only. That means whatever we study in calculus, we study around the sets only. Fine. So you should understand the importance of these sets. और sets के questions, sets की application वाले questions हमारे हर competitive exam में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। फाइन, सो यू शुड स्टडी दिस टॉपिक बाय हार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फाइन, so the next point that we have to study is your power set. It is point number 11, power set. Fine, so what is this power set? Basically power set is a set of subsets. Let A be a set. A हमारे पास कोई सेट है, then set of all the subsets of A, then set of all the subsets of A is called its power set, is called power set of A, and it is denoted by P of A. P stands for power set of A. Fine. Let's take a very simple example. We said A आपके पास है 1, 2, दो elements हैं हमारे पास. Fine. So the power set of A का जो power set होगा, it will contain 5. It will contain this set with element 1, set with element 2, and set with element 1, 2. That is the set itself. तो ये चारों एलिमेंट्स को, चारों सेट्स, सबसेट्स को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिया. नाउ इट हैज बिकम योर पावर सेट. फाइन. अब इस पावर सेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कीजिए. पॉइंट नंबर 1, इफ A is equals to 5, अगर आपका A क्या है 5, that means null set. तो पावर सेट ऑफ A will contain only one element. That is 5. एक ही एलिमेंट होगा. तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1. फाइन. अगर सेट आपके पास क्या है 5 है, एक ही सबसेट होगा क्योंकि इसका. Second, power set of a given set is always non-empty. This is very important thing.
पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट, किसी भी सेट का अगर मैं पावर सेट लिखूंगा तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा, इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। फाइन, वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा आपका। पॉइंट नंबर 3 यू कैन राइट इफ ए हैज n एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, इसी सेट के अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, then PA has power set of A has 2 raised to the power n elements, यानी कि उस सेट के जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 raised to the power n। फाइन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2 raised to the power n होंगे। फाइन, पॉइंट नंबर 4 हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ 5। नल सेट जो है आपका, उसका पावर सेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। पर इसी को मैं और प्रोसीड करूं, पावर सेट ऑफ 5, ये अगर आप देखते हो उसमें आपके पास क्या होगा, एक तो आपको 5 नल सेट मिलेगा, दूसरा ए सेट मिल गया आपको। So likewise it is going to be very important। अगर आपको मैं कहूं कि पावर सेट ऑफ 5, ये आप लिख करके मुझे बताइए। तो आप कोशिश कीजिएगा और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कशन किया आपसे रिगार्डिंग द पावर सेट की, हमारे पास पावर सेट में क्या होता है। पावर सेट के कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स आपको दिए, यू शुड नोट देम डाउन केयरफुली। और नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 12, इट इज रिगार्डिंग इक्विवेलेंट सेट्स। ये हमारे पास है कि दो सेट्स हमारे इक्वल कब होंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर A is contained in B and B is contained in A is a subset of B and B is a subset of A, then we call those sets as equal sets। Equivalent क्या होता है कि if they have the same order, two sets A and B are said to be equivalent sets if order of A is equals to order of B। अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दोस सेट्स एज इक्विवेलेंट सेट्स। या फिर इन्हें हम कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। फाइन, यहाँ भी एक मैं नोट दे देता हूं आपके लिए, इक्वल sets are always equivalent। अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे हमेशा, बट इक्विवेलेंट सेट्स may or may not be equal, but equivalent sets may not be equal। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। फाइन, पॉइंट नंबर 13 हमारे पास आता है फिर कंपेरेबल सेट्स एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल
sets and non-comparable sets. फाइन। देखिए कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल हम कैसे देखते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी nor b is a subset of a. If neither a is a subset of b nor b is a subset of a, then a and b are not comparable. फाइन, तो दोनों चीजें हमने यहाँ देखी, टू सेट्स a and b are comparable. कंपेरेबल कब होगा हमारे पास, if a is a subset of b. A is a subset of b nor b is a subset of a. Fine. If a is a subset of b, or sorry, here I should write if neither a is a subset of b nor b is a subset of a, then a and b are नॉन कंपेरेबल, मीन्स हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कब हो सकता है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है तो वो कंपेरेबल है, बट ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो वी विल कॉल दोस सेट्स एज नॉन कंपेरेबल सेट्स। फाइन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। भाई ये हमारे पास जो हम कहें अभी तक हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम एप्लीकेशन पार्ट, सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। So the first operation that we study, it is union of two sets। दो सेट्स का हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। सो द सिंबल फॉर दिस यूनियन इज दिस यू। दिस इज, आपने यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया था, ऐसे ही ऑपरेशंस के लिए हमारे पास यूनियन का सिंबल जो है इट इज यू, एंड हाउ वी डिनोट इज ए यूनियन बी। A union B means the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B। x belongs to A होगा or x belongs to B, then we say that x belongs to A union B। This or is the word which is used for union। Fine। Example we can take, A आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4, B is another set, it contains 4 5 6, तो A union B आपके पास क्या होगा, the set of all the elements which are either in A or in B। 1 2 3 4 5 6, ये चीज आप जानते हैं कि सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इनसाइड अ सेट। फाइन। सो विल सिंपली, एक सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है सेट की कि ए यूनियन बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to A or x belongs to B। सेकंड हमारे पास जो इसमें ऑपरेशंस में पॉइंट आता है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन देखेंगे। The symbol for intersection is this inverted U। So A intersection B, what does it say intersection B? The set of all x such that x belongs to A and
x belongs to B. वो एलिमेंट आपका A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए. Then it is an element of the intersection. Intersection means the common elements. A अगर आपके पास है 1, 2, 3, 4 and B you have 3, 4, 5. Then your A intersection B means A और B में common elements क्या है? Then 3, 4 is the value of A intersection. After this we have next जो हमारे पास यहाँ टॉपिक है, it is थर्ड पॉइंट मैं कहूंगा आपको. हमने यूनियन ऑफ टू सेट स्टडी किया, उसके बाद आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट स्टडी किया. लेट मी मार्क अ लाइन हियर. आई होप सभी आप ये पॉइंट्स नोट करते हुए चल रहे होंगे. ठीक है, देखिए बेसिक फंडामेंटल्स में सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ. आप फाइन. इनिशियली आई सजेस्ट यू पीपल कि आप पहले एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर करें. और वैसे अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा एनसीईआरटी आपका यहाँ कवर होता जा रहा है. बट स्टिल यू नो एज अ मैथमेटिशियन आई सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी की रीडिंग आप जरूर करें. इट इज अ वेरी गुड बुक. Okay, so the next point that we have to study is difference of two sets. Fine, हमने union study किया, intersection study किया, and the third that we have to study is difference of two sets. Fine, दो सेट्स का आपने डिफरेंस स्टडी करना है. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है यहाँ पर A माइनस B से हम डिनोट कर देते हैं. Fine. So what does it say? Minus B. It is the set of all x such that x belongs to A. Fine. And x does not belongs to B. Fine. X A को belong करेगा, but x B को belong नहीं करना चाहिए. That is known as your A minus B. तो देखिए A आपके पास है 1, 2, 3. B आपके पास है 3, 4, 5. तो A minus B का मतलब है from A I'll remove the elements of B. अब A में से आप B के एलिमेंट्स को रिमूव करोगे तो आपके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटाने के लिए बोल रहे. तो A minus B is 1, 2. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो हमें यहाँ मिलेगा, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो A डैश, से डैश, डैश से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को. द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to x does not belongs to A but x belongs to U. फाइन. इसे आप u माइनस ए भी कह सकते हैं कि u में से आप a को रिमूव कर दो, what you are going to get the complement of A. फाइन. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है आपका कि आप उस सेट को हटा दीजिए, बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट. वो उस सेट का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट से इनका पर्पस क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. राइट. सो दिस कॉम्प्लीमेंट सिंपली मींस रिमूव A from the universal set, you'll get the complement of that set.
So let's move on to the next, De Morgan's law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम यहाँ सेट थ्योरी में से यूज करेंगे। अगेन यूजिंग सेट थ्योरी जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देयर आल्सो विल बी यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो होता है, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी डे मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट हमारे पास जो होता है, इट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फाइन, ये दो सब पार्ट्स हैं हमारे पास डे मॉर्गन्स लॉ के। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपका A complement union B complement के इक्वल होगा। Fine. After this we have next जो यहाँ हमारे पास आता है, that is point number 15 I should say, disjoint sets। ये भी एक बहुत important definition है, disjoint sets। So if A intersection B A intersection B, it is equals to 5, then A and B are said to be disjoint sets। A और B को हम क्या बोलेंगे? disjoint sets बोलेंगे। कब? अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेट A हमने लिया 1 2, set B we have 3 4, then your A intersection B, it is equals to 5, and I'll say A and B are disjoint sets। फाइन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। फाइन, देयर ओनली पॉइंट नंबर 16 हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा 5 होता है। फाइन, सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट और आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं आपके? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं हमेशा, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं कभी। Then from here only we can define symmetric difference। Symmetric difference of sets। Fine. So we denote this symmetric difference by A delta B. It is equals to what? A minus B। A में से B के सारे एलिमेंट्स हटा दो, यूनियन B minus A। Fine, A minus B union B minus A, it is symmetric difference of A and B। देखो इसे अगर हम वेन डायग्राम से शो करना चाहें तो A symmetric difference B, ये क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सेट A है आपके पास, ये सेट B है आपके पास, तो ये जो पोर्शन होता है आपका, दिस पोर्शन इज A minus B and this portion is your B minus A। Fine. So what this asymmetric difference B denotes? It denotes A minus B और B minus A का यूनियन। इसका मतलब ये जो बीच में आपका कॉमन पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। This both the circles will be the part of the symmetric difference। Fine. Then we have certain very simple properties। I should write them together। Point number 17 we have कि अगर हमने A complement का complement लिया, fine, so what we get the set A itself। Then we have point number 18, if
A is a subset of B, अगर A B का सबसेट है, fine. So what this implies, A subset of B implies A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, B के अंदर. तो B complement is a subset of A complement. B complement जो है वो A complement का सबसेट होगा. Fine. Point number 19 we have if A is equals to B, what does it implies? A is a subset of B and B is a subset of A. ये मैं पीछे भी डिस्कशन कर चुका हूँ. A equals to B. देखो A equals to B अगर हमें प्रूव करना है तो हम कहेंगे A is a subset of B and B is a subset of A. और कहीं अगर A equals to B मुझे दे रखा है तो उस केस में मैं क्या कहूँगा कि I'll just prove that A is a subset of B and B is a subset of A. Fine, I'll just consider that part. कि अगर हमें it is given that A is equals to B. Next we have point number 20. Number of elements in A union B. It is given by number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. एक सिंपल हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्मूला है. फाइन, इसी में मैं अगर कहूं if A intersection B it is equals to 5, that is A and B are disjoint. अगर A और B आपके क्या हो जाते हैं, disjoint, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B जो होगा it is equals to n of A plus n of B. Right? This is for this case when A and B they are disjoint sets. Right? Let's take another part. कुछ important properties हैं हमारे पास इसमें. 21 point है if A and B are any two sets हमारे पास दो सेट्स हैं कोई भी, then first part I should say here A minus B, ये हमारा किसके इक्वल होगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के. आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, B माइनस A जो होगा आपका इट इज B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. थर्ड पार्ट जो है आपके पास व्हाट दिस थर्ड पार्ट सेज कि अगर A माइनस B आपका A आ जाता है. अब देखो A माइनस B A अगर आपको मिलता है इसका मतलब क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो आपका क्या है 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जब मैंने A माइनस B आपको लिखवाया था तो उसमें से हमने क्या कहा था, A में से आप B के एलिमेंट्स निकाल दो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो. तो अगर A माइनस B A ही मिल जाता है दैट मींस देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B एंड इट इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इज 5. फाइन. पॉइंट नंबर 4 हमारे पास यहाँ जो इस प्रॉपर्टी से हमें मिलेगा, दीज ऑल पॉइंट्स यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर. फाइन. और जहां भी चांस मिले आपको अप्लाई करना आना चाहिए. A माइनस B इसका यूनियन अगर मैं B के साथ लूं तो what I am going to get, I am going to get A union B. भाई A minus B का यूनियन हमने B के साथ लिया तो हमें A यूनियन B मिलेगा. ये सब वेन डायग्राम से आप वेरीफाई करेंगे. A माइनस B का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे B के साथ, फाइन, तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा 5. देखो एक वेन डायग्राम बना लो, वहां से आप ये सब चीजें सोच सकते हो. This is A, this is B, A, B. ये पोर्शन है आपका A माइनस B. अब देखो A माइनस B इज दिस पोर्शन. इसका अगर मैं कॉमन पार्ट लूंगा B के साथ, B इज दिस,
तो a माइनस बी, और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज 5। और a माइनस बी का यूनियन अगर हम b के साथ लेंगे तो दोनों सर्कल्स कवर हो जाएंगे, जैसे a यूनियन b। पर पॉइंट नंबर 6 भी हम लिख लेते हैं यहीं पर, वो हमारे पास है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये आप पीछे देख चुके हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस आप जिसे कह रहे हैं। सो इट इज नथिंग बट a यूनियन b। इस a यूनियन b में से आप क्या चीज हटा दो, जस्ट रिमूव a इंटरसेक्शन b एंड यू विल गेट asymmetric difference b, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में सिर्फ वो कॉमन वाला पार्ट नहीं आता, rest everything is there, right? Next we have point number 22 and it says number of elements in a minus b। a minus b के एलिमेंट्स में कैसे फाइंड करूंगा, इसी वेन डायग्राम से देखिए। a में से आप क्या माइनस कर दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। so what is this a minus b? It says number of elements in a minus number of elements in a intersection b। we have point number 24। 22 के बाद 23 होगा। What is this? Number of elements in A symmetric difference B। Fine। क्या होगा इसमें? A symmetric difference B is A minus B union B minus A। Fine। So how we will write? It is number of elements in A minus B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए। क्योंकि देखिए a माइनस बी और b माइनस ए दोनों हमारे पास कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। इसलिए डिसजॉइंट सेट्स के केस में मैंने आपको डेफिनेशन प्रॉपर्टी बताया था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट दिस पार्ट डायरेक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a, ये पार्ट हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसी चीज को आप एक्सटेंड करें तो आपने देखा यहाँ a माइनस बी में हमारे पास क्या होता है, a में से आप a माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस कर दीजिए। सो व्हाट विल यू गेट हियर, n a माइनस b एज n a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ऐसे ही n b माइनस a क्या होगा आपके पास, n b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। So you can write the complete formula as 0.24 का जो आपके पास होगा n of a symmetric difference b, it is n a plus n b minus 2 times of n a intersection। This is what you can write as a final formula, right? So this is point number 23 only, sorry, उसी को हमने रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ होगा, वी हैव पॉइंट नंबर 24। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अगर चैप्टर पहले एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो एक तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक बार रिव्यू हो जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ फोकस होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैं आपको एक बार पूरे चैप्टर का सिर्फ एक रिव्यू दे रहा हूँ। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 24। ये सारे बेसिक पॉइंट्स यहाँ कवर हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने अभी आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो कैसे करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट को ही रिमूव कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, फाइन, दैट इज हाउ वी विल फाइंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दूसरा मेरे पास होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसे डिमॉर्गन्स लॉ से आप क्या लिखोगे, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। और वो कैसे लिखा जाएगा आपका, फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट वी विल डिलीट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B and that will give you A complement union B complement, fine। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पॉइंट नंबर 25 में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, फाइन। A यूनियन B यूनियन C हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिलेगा, वेन डायग्राम से भी हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन A and then we have plus find number of elements in A intersection B इंटरसेक्शन C। ये हम लोग देखेंगे आगे वेन डायग्राम से भी कि कैसे हम इन चीजों को बड़ा इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वी हैव पॉइंट नंबर 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन exactly two of the sets A, B and C। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की बजाय आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हम इस चीज को वेन डायग्राम की हेल्प से समझ भी सकते हैं और अगर कोई फॉर्मूला डिराइव करने को हमें बोल रहा है तो वो भी हम कर सकते हैं। A, B और ये आपके पास हो गया C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स A, B एंड C से इनका मतलब क्या है। तो टू ऑफ द सेट्स का मतलब एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स का मतलब ये जो मैंने पिंक शेड यहाँ किया आपका, दिस पोर्शन डिनोट्स एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सेट्स A, B एंड C। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो बड़ा सिंपल है अगर आप वेन डायग्राम से करते हो। सो एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सेट्स मींस सबसे पहले मैंने आपको यहाँ क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B एक कंप्लीट पार्ट होगा जिसमें बीच वाला सेंटर पार्ट जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो भी इंक्लूड हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C, इसमें फिर से ही मिडिल वाला पार्ट इंक्लूड हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन A, इसमें फिर से ये जो मिडिल पार्ट, ये जो पार्ट है दिस पार्ट डिनोट्स योर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये तीन जगह इन्वॉल्व हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इज इट फाइन, क्योंकि कोई भी चीज सेट में हमारे पास रिपीट नहीं होती, दैट इज द रीजन हमने यहाँ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फाइन, सो इट इज वेरी इजी, अगर आप इन फॉर्मूलों को डिराइव करते हो यूजिंग द वेन डायग्राम, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। अब इसी में एक और पार्ट में कहूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स A, B, C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन exactly one of the sets A, B, C। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स का मतलब यहां भी देखिए, पहले वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि
एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट से इनका मतलब क्या है। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आप वेन डायग्राम से करो और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी वेन डायग्राम से सॉल्व करो, सो इट विल बी वेरी इजी। अदरवाइज फॉर्मूले क्रैम करते रहो। एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री सेट्स का मतलब ये पार्ट आपके पास, then you have this part, then you have this denotes your exactly one of the three sets. तो अब देखिए इसका हम अगर डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहें तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिया आपने, फाइन, ए के एलिमेंट्स लेके आपने। अब इसमें फिर से हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी लिखा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी लिखा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते थे, देखिए कि आई शुड डू दैट ओनली, कि मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि आप खुद से इसको समझें और डिराइव करने की कोशिश करें। देखिए ए जब हमने लिखा यहाँ, तो ए में से अब मुझे क्या पोर्शन माइनस करना है, ये वाला पोर्शन मैं माइनस कर सकता हूँ। व्हाट इज दिस, ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस ये पोर्शन भी माइनस होगा, ए इंटरसेक्शन सी, फाइन। तो अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो ये जो पोर्शन था कॉमन वाला ये माइनस हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और जब आपने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो ये दोबारा भी माइनस हो गया। दो बार आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप एक बार इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो ए के लिए मैंने किया इस पोर्शन को ओनली ए निकालने के लिए, ऐसे ही आप ओनली बी के लिए लिख सकते हैं, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली मैं यहां सी के लिए भी लिख सकता हूं इसी चीज को, प्लस एन ऑफ सी, अब इसमें से क्या माइनस होगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको क्लब अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी minus twice of n b intersection c minus twice of n c intersection a और plus 3 times of n a intersection b intersection c, fine. So it is nothing but number of elements in exactly one of the, ये हमें क्या मिला, number of elements in exactly one of the three sets, fine. One of the three sets में हमें exactly elements जो मिलेंगे वो हमने यहाँ देखे, fine. So this is this completes the theoretical part that we have in the set theory, fine. In next session what we are going to discuss, we are going to discuss some multiple choice questions, fine. That is what we are going to discuss in the next class. But before that I request you all, I advise you all to complete this whole theoretical part. जितना भी theory हमने यहाँ discuss किया, from the definition of the set till the application of sets, वो सारा का सारा theoretical part आप लोगों ने जितना प्रॉपरली, जितना वेल अरेंज्ड वे में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, फाइन।
इनको रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू कीजिए so that before our next class you should have a complete and thorough understanding of all the topics of sets. Thank you very much. I hope you all are enjoying learning the set theory, and we'll be doing a lot of good questions from the different competitive examination exams that are being conducted, and from the different books we will do a lot of questions, and I hope you will crack these competitive exams very easily if you will follow these lessons very carefully. Thank you very much. See you all.